everyone, welcome back to my vlog. Good morning. In this video, I'm going to cover the routine and activities of day 2 of our Ha Long Bay cruise. Most cruise ships follow the same schedule, so in case you're heading for Ha Long Bay cruise, you can check my video out. The nicest time of the day in Ha Long Bay is the morning. We start the second day of our amazing cruise with an early morning Tai Chi session on the upper deck of the ship. Tai Chi is an international Chinese martial art practiced for defense training, health benefits and meditation. It is said to boost mood, alleviate pain, strengthen the immune system and improve your heart health. What better way to start your morning than this? I strongly recommend you go empty stomach to avoid any happy and smelly accidents. After some morning kisses while taking in this ever-changing view, it's time for a light breakfast in the restaurant. चाबी ले ली? After morning Tai Chi class, we are going. The breakfast consists of all the things you would find in any good 5-star restaurant, including some amazing local Vietnamese dishes like fresh pho. Apart from this, there's the usual sausages, ham, salami, bacon, made to order eggs, a selection of breads, pastries, fruits and a wide variety of other dishes. Pho? Yes. Now this is what you call breakfast with a view. Watermelon is my best friend in Southeast Asia. From all my travels in Asia, I would say that local Vietnamese pho is my favorite breakfast dish. So when in Vietnam, eat like the locals. It's now time for an exciting excursion, a visit to the Dark and Bright Cave and their surrounding islands. So अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? Cave. Subterranean cave. Local bamboo boat. तो अब ये बोट हमें लेके जाएगी कहीं दूसरी जगह और यहाँ से हम जाएंगे लोकल बैम्बू बोट से केव देखने के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सुबह 7:15 बजे। अभी भी ठंड के मारे बुरा हाल। Where are we going, Vicky? We are going to Japan over there. Okay. Yeah. Go with me. Thank you. ये बैम्बू बोट दिख रही है आपको गोल वाली, वो लेके जाएंगे। वियतनाम का ये काफ़ी फिशरमैन यही बोट्स का यूज़ करते हैं लोकली जाने के लिए। ये है Ha Long Bay। खिड़की खोल। तो यहाँ भी टकराई हुई है। Sightseeing for Hang Toi Hang Sang, sightseeing of Gong and Bright Cave। ये दूसरी क्रूज के लोग अभी वेट कर रहे हैं। And now we yesterday we just go to the pier over there. This way. Listen this way. This area. This way. Yep.
ways. And Okay. yesterday you kayaking in this area. Hmm. Yeah. And today we just go and one half of the Casbah Island. Yeah. Casbah Island is the third largest island in Vietnam, just behind Cái Bầu and Phú Quốc Island only. So, and there are two things make Casbah Island be special with another one in Vietnam. The first one is about the land there. You know the land there? Langi Yes. दिखाओ। छोटी छोटी। This is the local bamboo boat which is going to take us inside the cave. The fishermen will go and take us to the cave. Are you awake? No. Show me your eyes. Không đi ngắm cá hả mà? पेट कर रहे हैं हम, 6 करके लोगों को बिठाते हैं। इस बैम्बू बोट से अभी लोग निकलेंगे, फिर हम जाएंगे इसके अंदर। This cave is not only known for the stunning limestone structure at every turn, but also for the interesting natural habitat. On the cliff, one can still find some traces of prehistoric fossils and freshwater snails. This area is surrounded by ancient fig trees and langurs, so please do not interact with them. Our oarsman was singing a beautiful Vietnamese song throughout the journey. ये बीच में ऑलमोस्ट 5-10 मिनट हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। ये हमारा जो रोमैन है केवट, वियतनामी, गाना गा रहे हैं। काफ़ी साइलेंट और पीसफुल है ये जगह। Enjoy the Vietnamese song. Yeah, I had to get back. Dù em thôi con gái yêu xa lấy nắng thăng thăng với khi nào em đi Once more. GoPro hyper smooth stabilization हम चेक कर रहे हैं बिकॉज बोट काफी और ये सामने वो दिख गया सबटरेनियन। दिस इज केव। If you're good at kayaking, then you can also take a kayaking tour all by yourself inside the cave. But be careful, the cave gets really dark in the middle and there are also lots of gigantic limestone formation protruding out of the water. This is one of the top sightseeing places in Ha Long Bay. Now it's time to head back to our ship and start packing for checkout and take a cooking class. ये wine free, it's finished. This also goes back the finished bottle. Yeah, nice mulberry wine. It was great. Vietnam. और ये हैं जो यहाँ पे न्यू ईयर के लिए लोग पेड़ में उगाते हैं। मेन चीज ये है कि इसमें कुछ seeds नहीं होते and it's so strong and deep flavor, not like Indian oranges. बहुत ही अलग flavor होता है. It's quite nice. शाहरुख खान। चप्पल फ्री चप्पलें इनको छोड़ना पड़ेगा। टाइम हो गया है, छोड़िएगा। किस करते
This was our room and now it will be somebody else's room and we are going back to Halong Hanoi, Halong Bay, Halong। जो प्राइवेट एरिया होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा खुला एरिया है, ये पूरा प्राइवेट एरिया है। This is around $350 US. Let's go. Keep all your game, highs and lows, This is a normal room, देख सकते हैं। highs and lows. So जब भी आप सफायर क्रूज में आए तो आप विकी से मिल सकते हैं। विकी Today, I'm gonna is our tour guide. I'm the Sapphire cruise. या और बहुत ही फन है और इन्होंने ही पूरा हमारा टूर गाइड कराया है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर। I had no boyfriend. Just introduce some boyfriend to me. No. विकी के लिए कोई आपको बॉयफ्रेंड चाहिए तो इंडिया। Bar. You can get any drink you want. Not too expensive. क्रूज में मिसकंसेप्शन होती है कि काफ़ी महंगा होता है सब कुछ, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 चाय और 165 का मोहितो लिया था तो 285 अराउंड 900 रुपीज़ इंडियन करेंसी में केवल। ये सारे क्रूज वापस जाते हुए, all the cruises are going in line towards the harbor. सुकृति is जेलीफिश ढूंढ रही है। वो जेलीफिश अभी ब्लू 1-2 दिखी थी, पर कचरा भी दिखा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे टूरिस्ट की वजह से समुंदर में बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे स्प्राइट की बॉटल्स और caught earbuds and stuff like that. So please कूड़ेदान का प्रयोग करें। इतनी सुंदर जगह को नष्ट होने से बचाएं। और सूरज की किरणें दिखती हुई पहली बार। स्पीड बोट डायरेक्टली क्रॉस करते हुए बिना बताए। Now it's time for a cooking class where we learn to make authentic Vietnamese spring rolls. To see the full video, please click on the link Keep above. all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and Sauce is everything. highs and lows. मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ब्रंच जैसा है। बिफोर चेकआउट के बाद आप बोट में मेन सिटी जाने से पहले काफ़ी चीज़ें ये देते हैं। टेम्प्यूरा फिश फिले, फ्राइड राइस। तो ये एग और वेजिटेबल है, वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन है। बाकी फ्रूट्स इज देयर एंड देन वेजिटेरियन के लिए दूसरा ऑप्शन ग्रीन सैलेड, देन देयर इज पास्ता सैलेड ऑल्सो, ये भी खा सकते हैं। पोटैटो सैलेड है, इसमें ट्यूना है, तो ये इतना ये आप नहीं खा सकते। तो थोड़े कम ऑप्शन है, बट एग अगर आप खाते हैं तो आपके पास काफ़ी पेट भरने लायक चीज़ें हैं। स्वीट एंड सॉर चिकन एंड देन देयर इज पोर्क रिब एंड पोर्क एंड सी फूड एंड बीच में क्रैब। तो थोड़ी सी चीज़ें कम हैं, बट वेजिटेरियन के लिए आप ले सकते हैं पास्ता सैलेड। पास्ता से पेट भरा जा सकता है। फ्रूट्स भी हैं। आई होप हमारे पास सारे नोट हैं। अभी देख सकते हैं बहुत सारे नोट हैं। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा वियतनामीज़ करेंसी के बारे में। तो थोड़ी इन्फ्लेटेड करेंसी है। मेन हमको ये याद रखना है 500 और मल्टीप्लाई बाई 3 बिकम्स सॉर्ट ऑफ इंडियन
इंडियन करेंसी के फॉर्मेट में आ जाता है। तो हमारे पास है अभी 1.5 लाख। एंड उसके बाद नेक्स्ट करेंसी है आपकी 50,000 डोंग, ऑलमोस्ट 150 रुपीज़। एंड दिस इज़ 1500 रुपीज़। 20,000 डोंग, देन देयर इज़ 10,000 डोंग, देयर इज़ 2,000 डोंग्स। 1,000 डोंग का भी मिलता है, 5,000 का भी मिलता है, अभी हमारे पास है नहीं। दैट्स ऑल अबाउट इट, लॉट ऑफ मनी। Then go back from Subtitles, mainland, and then going back to Hanoi. ऊपर वाला ये जो रूम देख रहे हैं ये हमारा था। Now we're going back to the mainland. ये अब हम क्रूज से वापस आते हुए सब हनोई के लिए हम जा रहे हैं रास्ते में वापस। क्रूज की जो बस है, अब ये इसी जगह रुके हैं जहाँ पे बीच में रुके थे। नाश्ता वगैरह, टॉयलेट वगैरह, चाय वाय पी सकते हैं। Sadly, now it's time to say goodbye to beautiful Vietnam as we head to our next country, the Philippines. We had the most amazing time here and learned so many new things. In my next video, I'm going to take you through my journey of the tropical paradise of Philippines, where we go to top tourist attractions as well as discover some hidden gems. So be sure to subscribe to my channel. Thanks for watching. Ciao.